Okay. So hello all, welcome to my channel. So guys, आज का हमारा वीडियो होने वाला है for SAP PP roadmap. So how to become SAP PP consultant in 2026. So जो लोग अभी SAP PP में करियर करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है. So first of all, what is SAP PP? So SAP PP means what? Production planning. So SAP, what is SAP? SAP stand for System, Application and Product in Data Process. Okay, SAP means what? System, Application and Product in Data Processing. So SAP क्या है guys? It is an ERP software. ERP means what? Enterprise Resource Planning. सो कंपनी का जो रिसोर्सेस होते हैं उनके प्लानिंग करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, उसको बोलते हैं ईआरपी. सो एसएपी इज द वन ऑफ द ईआरपी सिस्टम. सो एंड व्हाट अबाउट द पीपी? व्हाट इज पीपी? सो पीपी इज फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग. ओके, सो एसएपी पीपी एसएपी का एक फंक्शनल मॉड्यूल है. सो पीपी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग विच इंक्लूड प्रोडक्शन प्लानिंग एक्टिविटी एज वेल एज प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन एक्टिविटी. सो अभी रोल ऑफ एसएपी पीपी इन मैन्युफैक्चरिंग. तो एसएपी पीपी का रोल क्या होता है? अर्लियर वी डिस्कस. सो दिस यूज फॉर द टू डिपार्टमेंट. वन इज फॉर पीपीसी, अदर इज फॉर प्रोडक्शन. ओके, सो अभी एसएपी पीपी का रोल क्या होता है? सो प्रोडक्शन प्लानिंग करना है, प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन करना है. दिस एक्टिविटी वी कैन डू इन द एसएपी. So this is the useful for the production planning and production execution activity. Means what material we need to produce, how much quantity, when we need to start production, when should be complete. And ऐसा प्लानिंग हमें सिस्टम में करना है. एंड जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तब प्रोडक्शन कब स्टार्ट किया है, कब खत्म होगा, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगा. मीन्स एसएपी पीपी इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एज वेल एज प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट. सो अभी इंडस्ट्रीज यूजिंग एसएपी पीपी. कौन से कंपनी एसएपी पीपी यूज कर रहा है? सो नॉर्मली देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. फर्स्ट वन इज द आईटी कंपनी and second one is the manufacturing, then food, pharma, chemical, like this. So abhi manufacturing means what? For example, they are producing some goods such as the mechanical components, mechanical product they are producing, or automobile industry. This so we consider the manufacturing. Food means what? Any food products. So we can take chocolate, we can take example of Pepsi, Cola, Sprite, food and beverage. Then pharma means pharmaceutical company, those company who manufacture the medicine. And chemical industry means what? Chemical companies. So अभी IT कंपनी में ओपनिंग होता है for SAP PP consultant. आईटी कंपनी में ओपनिंग होता है फॉर एसएपी पीपी कंसल्टेंट. एंड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, फूड कंपनी होती है, फार्मा कंपनी होती है, केमिकल कंपनीज होती है, वो सब एसएपी यूजिंग कंपनी है. सो दे आर यूजिंग एसएपी फॉर देयर डेली एक्टिविटी. सो एसएपी का जो रोल होता है वो आईटी कंपनी में भी होता है एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट जॉब इन आईटी कंपनी. देन आईटी कंपनी क्या करती है? उनके पास प्रोजेक्ट होते हैं ये सब कंपनीज के, मैन्युफैक्चरिंग, फूड, फार्मा, केमिकल. सो हमें चांस मिलेगा वन ऑफ द प्रोजेक्ट पे काम करने का. सो ओके, सो इसमें दो टाइप के जॉब रोल्स होंगे. वन इज द एसएपी कंसल्टेंट एंड इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वी हैव एसएपी एंड यूजर. ओके, सो अभी जो लोग फ्रेशर है, जो फ्रेशर मीन्स और जस्ट कॉलेज पास आउट है, और जिनको एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, और दे हैव नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेसेस, दोज विल कैन डू द करियर इन द एसआईपी पीपी. और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, वो भी इसमें एंटर कर सकते हैं. और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी एसआईपी पीपी में एंटर कर सकते हैं. देयर इज नो बिग डील. सो यहाँ पर हाँ, वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हु कैन लर्न एसएपी पीपी. सो B.Tech मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, देन BSc MSc,
BCA, MCA, MBA operations, experienced manufacturing professional, fresher interested in ERP. Means SAP PPA में हर किसी को जॉब मिलेगा, those who have this education background. ओके, कोई फ्रेशर है उनको भी मिल सकता है, सम कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, उनको भी इसमें जॉब मिल सकता है, उनका करियर अच्छा हो सकता है। ओके, सो अभी रिक्वायर्ड स्किल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉलेज। ओके, सो पीपी कोर्स करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता होना चाहिए, बेसिक ऑफ ईआरपी कंसेप्ट, देन एनालिटिक थिंकिंग, बेसिक एक्सेल नॉलेज, देन SAP PP लर्निंग रोड मैप्स। अभी SAP PP हम कैसे लर्न करेंगे, उसका रोड मैप क्या होगा? फर्स्ट पेज मैन्युफैक्चरिंग फंडामेंटल्स, सो विच कंटेन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मेक टू स्टॉक, मेक टू ऑर्डर प्रोसेस, बिल ऑफ मटेरियल, routing, work center. These are the manufacturing fundamental. Then next is the PP master data, material master, bill of material, work center, routing, and production version. Then third phase is the SAP PP business process. So MRP stand for material requirement planning. So planning कैसे होता है उसके लिए MRP है. Then plan order होता है, production order, goods issue, production confirmation, goods receipt. Okay, then order settlement and takeoff. Then fourth phase, which is the configuration, so which consists of enterprise structure configuration, order type configuration, scheduling configuration, confirmation parameter, number range और सब configuration है। then हमारा जो master data है उसका configuration है। then next phase is the integration, MM, QM, SD, FICO, EWM, WM, ये सब मॉड्यूल के साथ पीपी का इंटीग्रेशन होता है। देन रियल टाइम प्रोजेक्ट लर्निंग, सो रियल टाइम में बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होता है, एज इस प्रोसेस क्या होती है, टू बी प्रोसेस क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग, SIT, UAT, गो लाइव, हाइपर केयर सपोर्ट, ये सब रियल टाइम प्रोजेक्ट का टॉपिक्स है। देन SAP PP सपोर्ट एक्टिविटी, सपोज कोई सपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उसमें इंसिडेंट मैनेजमेंट कैसे होता है, सर्विस रिक्वेस्ट क्या होती है, चेंज रिक्वेस्ट क्या होती है, रूट कॉज एनालिसिस मींस RCM, देन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें सीखना है। देन SAP PP इंटरव्यू प्रिपरेशन, सो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन, सपोर्ट सिनेरियोस। Then S/4HANA topics, Fury app, MRP Live, Advanced ATP overview, then embedded analytics, PP enhancement in S/4HANA। उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, मींस आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे विच इज द SAP S/4HANA सॉफ्टवेयर। तो इसमें हमें क्या करना है, एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो create sample master data, execute MRP, production process, orders, practical reporting, means हमारे जो all topics है, for example we have some topics, some master data, some transaction data, some configuration data. In master data we have material master, bill of material, work center, routing, production version. In transaction data we have the production order confirmation, reservation, MRP, capacity planning, long term planning, co-product, by-product, scrap, rework। ओके, ये सब हमारा ट्रांजैक्शन डेटा है। एंड कॉन्फ़िगरेशन डेटा में क्या आएगा, जो हमारे टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल इंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन, मटेरियल मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, बॉम कॉन्फ़िगरेशन, वर्क सेंटर कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्शन ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन विच कॉल्ड शॉप फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, MRP कॉन्फ़िगरेशन, then repetitive manufacturing configuration, process industry configuration, batch management configuration, ये सब होगा कॉन्फ़िगरेशन में। सो वो सब एक्टिविटी हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है SAP सिस्टम में। सो उसके लिए हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट इज दी करियर पाथ, सो SAP PP एसोसिएट कंसल्टेंट, SAP PP सपोर्ट कंसल्टेंट, SAP PP इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट, SAP PP सीनियर कंसल्टेंट, SAP PP सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड SAP मैन्युफैक्चरिंग लीड। ऐसे बहुत सारे रोल्स होते हैं। Okay, so most important is salary expectation, okay, in India. So fresher candidates को salary start होती है around 4 lakh to 8 lakhs. Then suppose experienced person है 2 to 4 year experience in SAP, 8 to 15 LPA, 5 to 8 experience, 15 to 30 LPA, 8 to 12 experience,
25 to 45 LPA. Okay, these are the salary expectation, but it depends on skill, your location, your employer, your SAP version expertise and your project experience. इस सब पे मैटर करता है. Then final learning plan. So learn manufacturing concept, then master SAP PP business process, practice on SAP S4 HANA system, learn basic configuration, understand integration with SD, QM and FI module, complete end-to-end project, prepare for interview with practical scenario, apply for support and implementation role. This is our final learning path. Okay. सो एक जस्ट इंट्रोडक्शन था. सो सपोज किसी को एसएपी पीपी में एंटर करना है, उसका उनको उसमें करियर बनाना है. सो 2026 में वो लोग करियर बना सकते हैं बिकॉज फॉर पीपी के लिए ह्यूज डिमांड है. सो पीपी कोर्स कौन कर सकता है? ओके, ऑलरेडी वी डिस्कस. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वन. सो दोज कैंडिडेट हु हैव degree in mechanical production instrumentation engineering, okay, BCA, MCA, BSc, MSc, वो सब लोग एक कोर्स कर सकते हैं इंक्लूडिंग MBA operations. So those candidates want to join our live session, live class with me, who can apply on my personal number. So my contact number is 9730567803. Okay, 9730567803. This is my पर्सनल कांटेक्ट नंबर. सो किसी को इंक्वायरी करना है, किसी को एडमिशन के लिए कॉल करना है, एडमिशन लेना है, वो सब कांटेक्ट कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच.